Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to English with Ikram. In my last video, Tenses Part 3, Section A, I discussed the application, the uses of first six tenses. And in this video, in today's session, I will discuss the application, the uses of next six tenses. I hope that you have watched all the videos, the structures, the sense and identification of all the tenses, and the uses and application of first six tenses, which are very much important. I am putting emphasis on this again and again, that if you want to learn to write and to speak English, you have to follow this series. You have to watch all the videos of this series. You will find all the videos in the playlist of tenses. आप मेरे चैनल पे जाएं, इंग्लिश विद इकराम, उसमें प्लेलिस्ट में टेंसेस की जो प्लेलिस्ट है उसमें ये सारी टेंसेस की वीडियोस हैं. फर्स्ट यू विल वॉच स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 12 टेंसेस, देन टेंसेस पार्ट 1, देन टेंसेस पार्ट 2 जिसमें आप सेंस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द टेंसेस, देन टेंसेस पार्ट 3 सेक्शन ए जिसमें एप्लीकेशन यूजेस ऑफ फर्स्ट सिक्स टेंसेस हैं. और आज टेंसेस पार्ट 3 सेक्शन बी में आई विल डिस्कस the uses and application of next six tenses. जब आपने स्ट्रक्चर सीख लिया, आपने सेंस और आइडेंटिफिकेशन आपने सीख ली, और अब आपको टेंसेस को अप्लाई कैसे करना है, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू राइट विद द हेल्प ऑफ टेंसेस. आपने स्टोरी खुद लिखनी है. इवन 9, 10, 6, 7, 8 के बच्चों से लेकर आपके ग्रेजुएट्स हैं, मास्टर्स हैं इंग्लिश के, BS इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, या आप टीचर्स हैं, आप बच्चों को स्टोरी खुद लिखाएं. वही स्टोरीज जो 50 साल पहले से लिखाई जा रही हैं, मॉरल्स वही है. नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. ये मॉरल आप चेंज नहीं कर सकते. नेसेसिटी हैज़ ऑलवेज बीन द मदर ऑफ इन्वेंशन. जाहिर सी बात है. इस मॉरल को आप, ग्रीड इज कर्स, तो ग्रीड वॉज कर्स, ग्रीड इज कर्स एंड ग्रीड विल बी द कर्स, नो डाउट अबाउट इट. ग्रीड कर्स है. लेकिन कहानी हमारी वही डॉग वाली है. तो यू शुड राइट योर सेल्फ. आपका जब ग्रामर का लेवल इस काबिल है कि यू कैन स्ट्रक्चर सेंटेंसेस योर सेल्फ. यू हैव टू थिंक. आपने अपनी कॉग्निटिव जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको, स्पेशली बच्चों को आप खुद उनसे काम लें. एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यही है कि मेक देम लर्न समथिंग विद देयर ओन क्रिएटिविटी. उनको क्रिएटिव बनाए. मतलब बच्चा क्रिएट कर सकता है, सोच सकता है, बट उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं पता उसे, उसकी ग्रामर का वो लेवल नहीं है, देन हाउ वुड ही क्रिएट. तो उसकी क्रिएशन जो है वो ब्लॉक हो जाती है. तो फॉर इस कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ उसको इन्हांस करने के लिए, उनको शार्पन करने के लिए आपने उनको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाना है. उनको आपने सेंस और आइडेंटिफिकेशन बतानी है. उनको टेंसेस की एप्लीकेशन बतानी है कि बच्चे विद द हेल्प ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यू कैन राइट द स्टोरी योरसेल्फ. दिस इज द स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर है और आपने कहानी खुद लिखनी है. अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी को भी आप इन्हांस करेंगे, वो खुद सोचेगा और लिखना भी आएगा. ऐसे आप उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, आप उसको एलिसिटेशन टेक्निक बताएं, उसको कहेंगे ऐसे खुद लिखे. दिस इज द टॉपिक. यू हैव टू थिंक योर सेल्फ. सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंसेज हो, लेकिन वो अगर सोच सकता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं पता तो लिखेगा कैसे. सो structure, sense and identification and application, everything is equally important. यही इसका एक reasonable process है tenses का. Let's get started. In today's session I am going to discuss last six tenses. Tense number 6 is present perfect. Right? What are the uses of present perfect tense? I told you in my last video, senses are identification of tenses. There is a slight difference between simple past and present perfect tense. Again I repeat, simple past tense, action occurred, finished in the past. You use simple past tense for describing your past habit, your past incidents, past occurrences. But here in present perfect tense, any action that occurred close to present. इसका सेंस आप दोबारा वीडियो देख लें. पिछली सारी वीडियोस टेंसेस की लिंक्स में होंगी. डिस्क्रिप्शन के लिंक में, डायरेक्ट लिंक पे आप क्लिक करें, वीडियो देख सकते हैं. आपको चैनल पे दोबारा वापस जाने की ज़रूरत नहीं है. प्रेजेंट परफेक्ट, एन एक्शन दैट अकर्ड जस्ट नाउ. अभी अभी जो एक्शन आपने किया, क्लोज टू प्रेजेंट. आई हैव जस्ट फिनिश माई वर्क. आई हैव जस्ट लर्न द टेंसेज. आई हैव जस्ट अटेंडेड इंग्लिश टेंसेज क्लास. एनीथिंग दैट अकर्ड जस्ट नाउ, माइंड डायरेक्शन, छोटे छोटे काम. अभी जो आपने काम कंप्लीट किया है, वेरी क्लोज टू प्रेजेंट.
This is the first use of present perfect tense. Any action that occurred, that you did, that you have done just now. For example, आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट की जो सिमिलरिटीज़ हैं या उनका कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करने के लिए. फॉर एग्जांपल, इट्स 8 o'clock. यू आस्क अबाउट समबॉडी इज टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट. आप किसी से पूछते हैं उसने नाश्ता किया कि नहीं है 7:30 और 8 पे. नाउ दिस इज एन एक्शन, अ टाइम दैट इज वेरी क्लोज टू द टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट. नाउ यू वुड आस्क, हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट? बिकॉज दिस इज अबाउट एन एक्शन दैट इज अकर्ड वेरी क्लोज टू प्रेजेंट. टाइम इन नाश्ते का है. अब 12 बजे 2 बजे आप किसी को देखते हैं उसमें हिम्मत नहीं है, सकत नहीं है, चल नहीं सकता, सुबह की बात है, दैट इज एन एक्शन दैट अकर्ड इन द पास्ट. आप उससे पूछते हैं नाश्ता किया है, डिड यू टेक योर ब्रेकफास्ट? Because now you are talking about an action that was in the past. Time has passed. अब उसका इस वक्त नाश्ते से कोई तल्लक नहीं है. So now I hope that the difference should be clear. Action occurred in the past, completed in the past, past habit, past incidents. Time mention होता है उसमें, और इसमें time mention नहीं होता. ये बात भी ध्यान में रखें, इसमें टाइम ऑफ द पास्ट मेंशन नहीं होता प्रेजेंट परफेक्ट में. और सिंपल पास्ट में चाहे 2 मिनट पहले या yesterday, last Monday, last Tuesday, 2 years ago, 1980, टाइम मेंशन होता है. और इसमें हम टाइम मेंशन नहीं करते. एक्शन अकर्ड क्लोज टू प्रेजेंट. आई हैव जस्ट फिनिश माई लंच. आई हैव जस्ट टेकन माई लंच. Action, the first use is action occurred very close to present. Okay, the next one is you have to write example yourself. If you want to write correctly, I am repeating this again and again. If you want to write, if you want to speak, you have to practice yourself. The next one is action occurred recently. Now these are a bit major actions. ऐसा काम जो थोड़ा सा बड़ा है, that you took 2 months, 2 years even. Anything that occurred very recently. Recently, I have visited Lahore. पिछले महीना 2 महीने. Recently, I have learned English language. I have got admission in BS English recently. 2 महीने 3 महीने पहले. An action occurred very close to present. An action occurred recently. पिछले 2-3 महीनों में, 5 महीनों में, 6 महीनों में, साल में. Right? Coronavirus has broken out recently. 2-3-4 महीने हो चुके हैं. This is the second use. And the third one I discussed in the sense identification of this tense as well. Third is major action of the past. Action of the past, but that's very important. Though this action occurred in the past, maybe 20 years ago, but you are giving importance to that particular action today. Action past का है, far past का है, लेकिन आप उसको आज भी इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं. देन यू विल डिस्क्राइब दैट पर्टिकुलर एक्शन विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आई हैव बिन टू अमेरिका. मैं अमेरिका में रह चुका हूँ. आई हैव गॉट 7 बैंड्स इन आइल्स. बेशक आपने 5 साल पहले लिए हैं, बट यू आर गिविंग प्रोमिनेंस, इंपॉर्टेंस टू दैट पर्टिकुलर एक्शन टुडे. राइट? तो दीज 3 आर मेजर यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एक्शन अकर्ड वेरी क्लोज टू प्रेजेंट. अभी भी जो आपने काम किया, एक्शन अकर्ड रिसेंटली, चाहे आपने किया आपके शहर में हुआ, दुनिया में, यूनिवर्स में हुआ, हेल्थ में हुआ, पॉलिटिक्स में हुआ, जहाँ कहीं कोई भी एक्शन रिसेंटली हुआ, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं. एंड देन एनी एक्शन जो पास्ट में था वो पुरानी बात है, लेकिन आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन इज पास्ट परफेक्ट. आई हैव डिस्क्राइब दैट इन द यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. Whenever we use past perfect, this tense alone cannot make any sense.
we use since, and when there is just a duration we use for. 2 घंटे, 5 मिनट, 10 साल, 2 साल, this is just a duration we use for. 5 सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ. I have been living here for 5 years. मैं 2015 से यहाँ रह रहा हूँ. I have been living here since 2015. When there is exact time, point of time is there, then we use since, otherwise for. दोनों में डिफरेंस की बात ध्यान में रखनी है. इफ़ टाइम ऑफ द, ये आम तौर पे कॉमन मिस्टेक बड़े हाई लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे की जाती है. जब हम सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं टीचर्स को, ये इस स्कूल में 5 सालों से पढ़ा रहे हैं, ही इज़ टीचिंग, तो ये गलत है. जब पास का टाइम मेंशन है, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. और इसका स्ट्रक्चर, और मैं स्ट्रक्चर में पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूँ. आई हैव बीन स्टडिंग हियर, आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 5 years. I have been teaching here since 2015. Right? The next one is past continuous. Very slight difference. Past perfect continuous, sorry. An action that started in the past, that was continued till a specific point, but now it's present, that action is no more. Then this is past perfect continuous. The same sentence for. For example, बारिश हो रही थी. It means that now it's not raining. Time of the past is again वो mention होगा. 2 घंटे से बारिश हो रही थी. Action started 2 hours ago. That was continued till a specific point, but now it's not raining. This is past perfect continuous. 2 घंटे से बारिश हो रही थी. It had been raining for 2 hours. सुबह से बारिश हो रही थी. It had been raining since morning. It means now it's not raining. मैं 5 सालों से यहाँ रह रहा था, मीन अब मैं यहाँ से चला गया हूँ. I had been living here for 5 years. मैं 2015 से इस कॉलेज में पढ़ रहा था. I had been studying in this college since 2015. It means that now I have left this college. Right? Action started in the past, that was continued and still continue, present perfect continuous. Action started in the past, continued till a specific point, but now that action is no more, past perfect continuous. Okay, the last one, tense number 12, future perfect continuous. This tense is used very rare. An action that will have been in progress till a specific point in future. वो उस वक्त से ये काम कर रहा होगा. तो आम तौर पे ये टेंस बहुत कम इस्तेमाल होता है. तो दिस वाज something about the uses, the application of last 6 tenses. In tenses part 3 section A, I discussed first 6 tenses which are very much important, especially simple present tense, past indefinite tense, past continuous tense. क्योंकि आप जब ऐसे लिखते हैं, अब after learning the application, the uses of all the tenses, you should be able to write stories, essays, applications, letters, past incident, anything that you want to write, you can write with the help of all these tenses. But what you are supposed to do, you have to first learn the structures of all the tenses, tenses part 1, and then sense and identification of all the tenses, tenses part 2, then application and uses of first 6 tenses part 3 section A, and then section B of this tenses part 3 for the rest of the 6 tenses. And you have to watch with concentration, you have to write yourself, you have to write example, you have to take a notebook in your hand and watch these videos again and again, like these videos, share these videos, and if you haven't subscribed my channel, you should subscribe for effective learning. आपको इतना आसान तरीके से मेरे ख्याल में आपको कहीं किसी भी जगह से ऐसी वीडियोस नहीं मिलेगी इंशाल्लाह, जिसमें इतने आसान आपकी अप्रोच के मुताबिक प्रैक्टिकल स्टाइल में आपको ग्रामर स्पेशली बाकी चीज़ें भी वो सिखाई जाएंगी. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.